तो खेडूत मित्रों एक बार फरीथी स्वागत है आप सौनी पोतानी चेनल खेडूत ऑनलाइन पॉइंट में। तो दोस्तों आजनी विडियोनी अंदर आपणे 9 मोटी अने महत्वनी खेडूत विशेनी माहिती जाणवाना छीए। तो सौथी पहली अने महत्वनी खेडूत विशेनी माहिती आवी रही छे के डिसेम्बर में मोटी बैठक जीएसटी विशेनी। जीएसटी काउंसिलनी 55મી बैठक 21 डिसेम्बर 2024 ना रोज राजस्थानना जैसलमेर में योजावानी छे, जेमां महत्वना निर्णय लेवामां आवे तेवी शक्यता छे। आ बैठकनी अंदर केंद्रीय नाणामंत्री निर्मला सीतारमणनी साथे राज्योना नाणामंत्रीओ पण भाग लेशे। अगाऊ पण आ बैठक नवेम्बर में योजाय तेवी शक्यता हती, परंतु हवे ते डिसेम्बर में योजाशे। त्यारबादनी महत्वपूर्ण माहिती आगळ आवी रही छे दोस्तों के गुजरातीओना सपना साकार, खोराक, कपड़ा अने मकान आपणे बधाने 3 वस्तुओ माटे ज मेहनत करीए छीए। जो के आ पछी आपणे जरूरियात अने सगवड माटे वधु इच्छाओ राखीए छीए। एक वखतनी कमाणी करीने आपणे खावा पीवानी व्यवस्था करी लईए छीए, परंतु पोताना छतनी एटले के पोताना घर राखवानुं सपनुं पूरुं करवुं सहेલું નથી। मोंघवारीना आ युगमां आपणे सौ आपणा तमाम प्रयासोथी पोतानुं घर धरावतुं स्वप्न साकार करवा मांगीए छीए। आ माटे लोको होम लोन पण अपनावे छे, ज्यारे सरकार द्वारा आर्थिक रीते नबळा वर्ग माटे विविध योजनाओ पण शरू करवामां आवे छे। त्यारबादनी महत्वपूर्ण माहिती आगळ आवी रही छे दोस्तों के खेडूतो माटे मोटी जाहेरात। खेडूत देवा माफी ने लईने मोटा समाचार सामे आव्या छे। मोदी सरकार ज्यारे 2004 ना वर्षमां ज्यारे सत्ता उपर आव्या त्यारे एमणे कीधुं हतुं के 2022 सुधीमां खेडूतोनी आवक बमणी करी दईश। मोदी सरकारे आ वचन आप्युं हतुं। कहेवाय छे के मोदी सरकारनुं वचन तो खूब ज अनेरुं होय छे। मोदी सरकार वचन आपे ए वचन क्यारेय खोटुं जतुं नथी, परंतु आ वचननुं लक्ष्य हजी सुधी पूरुं थयुं नथी। 2022 में खेडूतोनी आवक बमणी करी देवानुं वचन आप्युं हतुं, परंतु हजू सुधी खेडूतोनी आवक छे ते बमणी थई नथी अने तेमज खेडूतोना देवा माफ छे ते हजी सुधी थया नथी। तो क्यारे मोदी सरकार आ वचन पूरुं करशे ते हवे खेडूतो माटे जोवालायक छे। त्यारबादनी महत्वपूर्ण माहिती आगळ आवी रही छे दोस्तों कि युवानोने 3000 रुपया वास्तविकता। सोशल मीडिया पर लिंक साथे एक मेसेज वायरल थई रह्यो छे, जेमां दावो करवामां आव्यो छे कि प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्थु योजना, जेमां सरकार बेरोजगार युवानोने दर महीने 3500 रुपया आपशे, जेनी साथे एक लिंक पण शेर करवामां आवी छे, जेना पर रजिस्ट्रेशन करवा माटे कहेवामां आव्युं छे। भूलथी पण आ लिंक पर तमे क्लिक ना करता, नहीं तो तमारी साथे फ्रॉड थई जशे। सरकारे आवी कोई योजना शुरू करी नथी जेमां युवानोने दर महीने 3500 रुपया आपवामां आवे, जेथी तमे पण सावधान रहेजो। त्यारबादनी महत्वपूर्ण माहिती आगळ आवी रही छे दोस्तों के देवा माफी अंगे खेडूतोनो विरोध। पाक वीमो देवा माफी सहितनी मांग साथे धरतीपुत्रोनी समस्याओनो उकेल लावी कृषि नीति बनावવાની मांग साथे गांधीनगर खाते धरણા कार्यक्रम योजायो हतो। खेडूतोए विविध मांगो साथे बेनरो साथे न्याय मेळववा रजूआत करी हती। पाक वीमो देवा माफी सहितनी मांग साथे खेडूतोए गांधीनगर खाते धरણા कार्यक्रम योज्यो हतो। सुरेन्द्रनगर सहित राज्यभરના धरतीपुત્રો हाजर रह्या हता, जेमां લીંબડી तालुकाना खंभलाव गामना खेडूत आगेवान भरतसिंह ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે સરકારની કૃષિ વિરોધી આર્થિક નીતિ મોંઘા બિયારણ, ખાતર, જંતુનાશક દવા, મજૂરી, ડીઝલ ખર્ચની ગણતરી કરતા 1 હેક્ટર જમીનનો વાવણીથી કાપણી સુધીના ખર્ચમાં ખેડૂતોને હજારો રૂપિયાનો ખર્ચ છે તે ભોગવવો પડે છે। તેથી દેવા માફી અંગે ખેડૂતોનો વિરોધ છે તે યોગ્ય છે કે નથી તે આપ મને કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો। ત્યારબાદની મહત્વપૂર્ણ માહિતી આગળ આવી રહી છે दोस्तों કે ગુજરાતની મહિલાઓને 15000 કેમ નહીં। આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ઈસુદાન ગઢવીએ મહારાષ્ટ્રમાં ભાજપે ચૂંટણી પહેલા જાહેરાત કરેલા વચનોને લઈ ગુજરાતમાં આવી જાહેરાતો કેમ ન થઈ શકે તેને લઈ ભાજપ ઘેરી છે। વડાપ્રધાન મોદીએ મહારાષ્ટ્રમાં મહિલાઓને દર મહિને મળતી 3000ની સહાયતાને યોગ્ય ગણાવી તો ગુજરાતની મહિલાઓને દર મહિને 3000 કેમ નથી આપતા તે ઈસુદાન ગઢવીનું કહેવું છે। શું ગુજરાતમાં પણ મહિલાઓને 3000 રૂપિયાની સહાય આપવી જોઈએ કે નહીં તે આપ મને જરૂર કમેન્ટ કરીને જણાવજો। ત્યારબાદની મહત્વપૂર્ણ માહિતી આગળ આવી રહી છે दोस्तों કે 25 તારીખ પહેલાં આ કામ કરજો। 28 राज्यों 15 ऑक्टोबर 2024 थी खेडूत नोंधणी शुरू थई गई है। पीएम किसान योजना तले आगामी डिसेम्बरना हप्ता माटे भारत सरकार द्वारा खेडूतोने आईडी नी नोंधणी फरजियात है। पीएम किसान योजना लाभार्थी आ लाभ मेळववा तारीख 25 नवेम्बर 2024 पहला नोंधणी करावी पड़शे। वेब पोर्टल थी दरेक ग्राम पंचायत कचेरी में नोंधणी थशे अने वधुमां खेडूतो जाते पण नोंधणी करावी शके छे। त्यारबादनी महत्वपूर्ण माहिती आगळ आवी रही छे दोस्तों के सरकारनी योजना गरीबो माटे वरदान। मोदी सरकार सत्तामां आव्या बाद एक पछी अनेक योजनाओ बहार पाडवामां आवी छे, जेना द्वारा जनताने घणो फायदो थयो छे। केंद्रनी मोदी सरकारे तेना नागरिकोने हितमां घणी योजनाओ शरू करी छे। आ योजनाओ गरीबो माटे वरदान साबित थई छे। मोदी सरकारे गरीब अने आर्थिक रीते नबळा लोकोनी मदद माटे घणी लोक कल्याण योजनाओ शरू करी छे। आजे तेनो फायदो देशना सामान्य लोकोने देखाई रह्यो छे।
ત્યારબાદની મહત્વપૂર્ણ માહિતી આગળ આવી રહી છે દોસ્તો કે કપાસના ભાવ હવે નહીં વધે. જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીની એડવાઇઝરી જાહેર. જાન્યુઆરી સુધી રૂનો ભાવ 1400 થી 1600 રૂપિયા વચ્ચે રહેવાનો અંદાજ. ગુજરાતના સૌથી મોટા પાક કપાસનો સંગ્રહ કરવો જોખમી. ભાવ નહીં વધે તો અમેરિકામાં ઊંચું ઉત્પાદન વૈશ્વિક ભાવને ઘટાડશે. તેમજ રાજ્યમાં 88 લાખ ગાંસડી રૂ પાકશે. તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતી આજની સૌથી મોટી અને મહત્વની ખેડૂત વિશેની માહિતીઓ. આશા કરું છું દોસ્તો કે આપ સૌને આ મહત્વની માહિતી પસંદ આવી હશે. જો પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં. ચેનલ પર નવા આવ્યા હો તો અમારી ચેનલ ખેડૂત ઓનલાઈન પોઈન્ટને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેના લીધે આવી જ મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપ સૌને આ ચેનલના માધ્યમથી મળતી રહે. તો દોસ્તો, મળી હવે પછીના વિડીયોમાં. ત્યાર સુધી જય હિન્દ અને વંદે માતરમ.